A very good afternoon to all the crypto enthusiasts and the buddies who are joined today's session. I'm Rekha Khan, your host for the webinar, and we have with us Mr. Saurabh Gupta, expert on real money gaming platform, joining us for the event today. Today, we're going to be talking about Metaverse and its competitive markets. On joining, you would notice that you all are in mute. If you have any questions throughout the webinar, would request you all to please type it on the chat section and we can take it up in our Q&A sessions as the session goes or at the end of the session. Thank you so much. From the creator of Odin MCX and IEX, here is yet another credible and exchange-neutral platform a user can rely on while walking towards a path of crypto and blockchain understanding. Starting from education to knowledge to all the latest news, all covered under one super app, Crypto Wire. From a novice to a professional trader, every market participant can have a slice of information readily available on the touch of their fingers. Let me take you through the world's first crypto university, Crypto TV and Crypto Wire services. We all know the crypto and blockchain ecosystem is emerging at an immense speed, and to keep a track of all the events, prices, and news looks to be difficult. But we have something for you. We have Crypto Wire, which is our buddy. Now, let me take you through the app briefly. Sorry, guys, there were some updates which had come in the app. We had to do the update before we showed you the screen. So this is the homepage of our app, which covers three verticals: Crypto University, Crypto TV, and Crypto Wire services. Under the Crypto Wire services, we have rolled out IC15 a couple of months back. It tracks the performance of the top 15 cryptocurrencies globally based on market capitalization. Crypto enthusiasts and crypto traders can make informed decisions based on IC15. Under the Wirewatch section, we can monitor the best exchange to buy and the best exchange to sell a particular cryptocurrency. In the center, in the yellow box, you can see the arbitrage opportunity available between the two exchanges for the same cryptocurrency. There are more than 400 plus cryptocurrencies listed on our platform, along with 70 plus exchanges worldwide. Coming to Crypto TV, it's an exclusive 24/7 mobile IPTV covering everything on crypto and blockchain ecosystem. We feature it in 4 different languages: English, Hindi, Gujarati, and Marathi. Coming to Crypto University. Crypto University, being the world's first digital university to offer courses on crypto and blockchain, you can find the best courses available on our platform. There are a lot of courses that have been uploaded, and I think we all should log in and see how best we can make use of the Crypto University vertical. With this, I would like to introduce our speaker for today, Mr. Saurabh Gupta. Saurabh is a co-founder and CEO of Tamasha Live, a creator-led real money gaming platform where micro and nano influencers from Tier 2 and Tier 3 cities can host real money games in their micro community and instantly monetize their engagement. The startup was launched in July 2020 by Saurabh Gupta and Siddharth, when they realized that there is a huge opportunity in real money gaming platform when people can come and play in the social groups led by influencers. Saurabh is a graduate from IIT Bombay, and he has worked with companies like Optimstick, In10 Media Group, and Redice Films at various roles, including product management, business, and gaming production. Can I have you on board, Saurabh, now? Hello, thank you. Thank you very much for the introduction. Welcome. And thank you, Crypto Wire, for inviting me for the second time for this session. Would love to share my learning. Would love to have this session a bit more interactive. Would love to learn from the audience as well, and make this session much more interactive, interesting. For all of us. Yeah. Sure. Sorry. So I think, today's session is around Metaverse, right? So before deep diving into, different aspects of Metaverse, let's quickly discuss and understand
what is Metaverse, right? And this buzzword is something which has become much more popular when Facebook founders Zuckerberg, he renamed his company Meta, right? And a lot of companies started coming up around Metaverse. A lot of people started building product around Metaverse. So would love to share my insights, my thesis around what is Metaverse and how the digital space would evolve over the time, right? In the coming years, in the coming months, right? So that's that. So I think what Mark Zuckerberg is building and what many other companies are building around Metaverse. Firstly, it's not necessary that is something that would be the only thing in the Metaverse that would be there. There would be a lot of interesting products and disruption that would happen over the time. So there are different ideas and philosophies that are working around Metaverse by different companies, right? So let's say what Zuckerberg is building, it's a very closed Metaverse, right? Which is centralized. The data is owned by the Facebook, right? And it is giving you very highly experiential, ecosystem, right? So they are working on hardware through Oculus and building virtual spaces through this platform called Horizon, right? So that is there. And then there are a lot of decentralized metaverse companies, there is a company called Decentraland, which is, building a decentralized virtual world, right? And people are buying lands and, cafeterias and things like that and trying to monetize, through it, right? So overall, I think the buzzword has become popular right now, but people have been working on the metaverse for the last probably a couple of decades, right? And there are multiple technologies that are working hand in hand, which will eventually led to create a world where people would be people would be having their identity or a digital identity, and they would be living that virtual identity, right? Because in general, we humans, in this physical world are very limited, right? We can do limited things. There is a limited science or physics that works, right? We can't break that. But in the metaverse, anything can happen, right? And that is a future world where people would be spending most of the time over the time, right? People might not be going to physical office. They might be, staying in the virtual spaces and doing their work much more effectively. People might not be, experience a lot of physical thing, and would be much like a lot of people might think it as good or bad, but this is what it is, right? This is how the world moves towards more of a efficient form, right, where a lot of inefficiencies are removed through technology, right? So I would quickly, like to break down the metaverse into, multiple, layers, right? And how each and every layer will evolve. Let's discuss around that, right? So creating that future world, which is, purely digital, experiential, right? Which is something, out of this movie, there was a movie Ready Player One, right? Which I think a lot of people who are here might have seen, right? Which is that there is some time that there is still there, and people are working on different layers of it, right? Because a single company can't develop the entire ecosystem, right? Even when there was Web 2, when internet was evolving, every company played their own role. Google played their own role, Amazon had a different role, or they disappeared a different area, and Facebook disappeared a different area, right? Similarly, in the metaverse, there are different layers, and different companies are working on these layers and creating the way to the future, right? And community layer, transaction layer, engagement layer, and infra and hardware layer. These are the four layers which I have broken it down, and would love to take it up one by one and discuss around it, right? And would love to hear your thoughts as well. That how do you guys think that these things would evolve, right? And each domain is a very exciting domain to work into or get into. I think
this is the best time to build for the metaverse, because the way people who entered into internet in the 90s, right, and right now most of them now are millionaires, billionaires. They are playing a very prominent role in the industry. Similarly, I think metaverse is in a very very early stage, that the actual products. So there is a huge opportunity in each and every layer which is mentioned here, right? So community layer, if we begin with, is something which is centered around people, right? So in the physical world, we see the real world is built of communities, right? Community is a core component of human existence, right? There are religions, there are castes, there are other communities around interest. There is a music community, there are teachers community, and different sort of communities are there. And humans, for humans, like, communities is a very basic thing, because of which even the world has evolved, right? If there would have been no communities in this real world, the kind of growth that we have seen, of humans in terms of technology and all, would not have happened, right? Even companies are communities, right? Because if you talk about any company, let's say Apple, whichever employees that are attached to the company, they are a part of that. They believe in that idea. They believe in the philosophy of Apple, right? So communities is a very core piece of center for the real world, and similarly, it will play a very major role in the future world, right? In the metaverse, right? So there are a lot of companies that are working around building that community layer, right? A much more decentralized community layer. So how blockchain will play its role in building much more genuine, or you can say democratized community, is something which I'll talk about, right? So currently the kind of structure which is there in different organization, it is corruptible, right? So let's say there's a corruption everywhere. There is a corruption in governments, nations, companies, or whatever, right? And it is there because the company structures are not driven by technology, right? There's no protocol which checks that someone is taking bribe or not, right? Those things can be done very easily, but in the digital world, it's very difficult, right? Even the decision making is very not very democratized. So a lot of politicians, they tell you that I'll do this for you, I'll do that for you, and eventually they don't end up doing that, right? So the real organizations are corruptible. But if you talk about the virtual world, the organizations are not that corruptible. There is a lesser possibility of corruption because they are run by codes, right? The codes verify that whatever is happening correctly or not, right? And that is how the future of communities would be. It would be much more decentralized, autonomous, right? That's why we call it DAO, decentralized autonomous organizations, right? Even in the companies, the decisions would not be taken by just the one person who is holding the maximum equity, right? The decision would be taken collectively, by the entire organization, right? So there are multiple areas where decentralized organizations are being built, different protocols are being built. Some of the examples are this protocol DAOs, which are essentially different protocols or utility products, right? So Uniswap is a decentralized exchange where you can buy or sell tokens. It is very decentralized, and the entire everything around Uniswap is governed by a set of people who own Uni tokens, right? And everyone has contribution toward decision making. Similarly, the investment would be much more decentralized, right? So currently the access to so let's say if you talk about a lot of good startups and good stories, like Ola, Uber, and things like that, we as a normal people never got a chance to invest in these companies. Secondly, it is very much centralized, controlled by very very few people, the entire investment industry, right? But as it becomes much more decentralized, it would be driven by the community and the people, right? People would be able to raise funds for different startups. They would be able to utilize it over the time and give the entire value directly to the people, right? There would be limited brokers in between, right? And the system would be much more efficient, right? And similarly, there are other DAOs, collector DAOs, social DAOs, philanthropy DAOs, grant DAOs, media DAOs, and sub DAOs, right? So a lot of possibilities are there. Even a lot of
traditional communities, even religions and, different kind of music based communities and, film based communities would eventually be shifted, towards more and more decentralized form of, organizations, right? So, yeah, so that is the community layer. Would love to answer anything if anyone want to ask. Otherwise, we'll move to the next piece. So coming to Anybody has any questions, they can type in on chat section, please. I don't think anything has come here as of yet. Okay. So coming to the next piece, which is moving the entire financial system, which is there. So, the financial industry has been one of the, very big industry overall in the current economy, traditional finance, right? There are banks. Saurabh, there is a request of a mix of Hindi and English, if possible. Okay, sure. Thank you so much. Okay, I'll do that. So yeah, so I was talking about transaction layer. Normal दुनिया में हम देखते हैं कि हर इकोनॉमी को रन करने के लिए एक कॉमन करेंसी होती है जिसमें सब लोग बिलीव करते हैं, राइट? जैसे हर कंट्री में देखो, इंडिया में रुपए होता है, यूएस में इट्स डॉलर, राइट? एंड अदर कंट्रीज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ basically form of money, right? And why money is used? Because it has some value which is acceptable to everyone and which doesn't change, right? A lot, right? And you see money ke around, there are a lot of systems that have been built. Log lending ke around systems bane hue hain, wallets, banks bane hue hain, itni sari mutual funds hain, wealth management companies hain, private इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज हैं, बहुत सारी इकोसिस्टम ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर बने हुए हैं. अभी जैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड इंक्रीज बन रहा है, एक वर्चुअल दुनिया बन रही है, उसके अंदर भी ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम रेप्लिकेट होगा. और ये जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम होगा, ये पूरा का पूरा बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड होगा. जैसे आज हम सुनते हैं कि यार बैंक्स में करप्शन हो जाता है, ऐसे येस बैंक में हुआ था, राइट? काफी सारे लोगों का पैसा डूब गया था. तो वो बहुत ज्यादा गवर्न होते हैं. ये जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं, ये भी करप्टेबल होते हैं, राइट? यहाँ पे कोई भी करप्शन कर सकता है, कोई भी. और इन द एंड सफर कौन करता है? द नॉर्मल पीपल, आम जनता, राइट? लेकिन जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम होते हैं, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता एक इंसान, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल दैट वन पर्सन कैन change or make changes or do corruption in those kind of financial ecosystem. That's why the future of finance is DeFi, right? Decentralized finance, जहां पर पूरा Web3 के ऊपर सारे के सारे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स रीबिल्ड होंगे, राइट? बैंक से लेके कंप्लायंस एंटिटी, पेमेंट्स, जैसे आज पेटीएम है, रेजर पे है, फोन पे है, गूगल पे है, उसी तरह से सारे के सारे Web3 के भी इसके वर्जन बनेंगे. आज आरबीएल है, एचडीएफसी है, उनके भी Web3 वर्जन बनेंगे, राइट? बहुत सारी लैंडिंग कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, सबके Web3 वर्जन बनेंगे और बहुत सारे बनना स्टार्ट भी हो गए हैं और एक सर्टेन स्केल पे पहुंच गए हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन एंड डिसरप्ट इन द कमिंग ईयर्स. तो जिस तरह से 20 साल पहले जो लोग इंडस्ट्री में, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में घुसे होंगे, वो आज बहुत बड़े बन चुके हैं. उसी तरह से क्रिप्टो के अंदर या मेटावर्स के अंदर जो नया फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनने वाला है, उसके अंदर जो भी एंटर करेगा वो उतना ही बड़ा इकोनॉमी बना सकता है, राइट? और there is a question in continuation to what you're discussing. What have Facebook, Google and Microsoft achieved so far in this world? Right. So Facebook, Google and Microsoft are the technology giants, right? And जब भी कोई कंपनी बड़ी हो जाती है ना, वो हमेशा उसके पास एक बैगेज होता है. बैगेज इन द सेंस कि वो लिमिटेड हो जाती है एक्सपेरिमेंटेशंस के अराउंड और चीजों को बिल्ड करने के अराउंड. तो डेफिनेटली बड़ी कंपनियां एक स्ट्रेंथ लेके आती हैं बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज, पैसे का बहुत एक्सेस रहता है, राइट? जैसे मैं सिंपल सा बात करूं, सो टॉकिंग अबाउट फेसबुक, Google and Microsoft, these companies like Microsoft has come up with a product called HoloLens, right? और HoloLens एक augmented reality product है जो कि उसने B2B में भी सेल करना स्टार्ट किया है, which creates a virtual world in the real world, right? आप उस ग्लासेस को पहनोगे, आपको रियल वर्ल्ड के अंदर वर्चुअल वर्ल्ड दिखाई देगा, राइट? मतलब वर्चुअल चीजें दिखाई देंगी, अपने फेवरेट कैरेक्टर्स आप देख पाओगे, पोकेमोन आप देख पाओगे रियल वर्ल्ड के अंदर, राइट?
अगर आप बात करो गूगल की, गूगल ने काफी सालों पहले से वर्चुअल रियलिटी के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया था. दे लॉन्च्ड गूगल ग्लासेस. अभी रिसेंटली दे हैव क्रिएटेड अ ह्यूज टीम अराउंड ब्लॉकचेन, जो कि क्रिप्टो के अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, राइट. जैसे AWS का एक रेप्लिका Web3 में भी होगा, राइट. उसके अराउंड Amazon एंड गूगल उस तरह की टेक्नोलॉजी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. हाउ कैन दे प्रोवाइड द इंफ्रा, राइट, which currently in the Web3 space Polygon is doing, right, which is an Indian company, right. Similarly अगर Facebook को देखा जाए, वो तो पूरी वर्चुअल दुनिया बना रहा है, right. So उन्होंने एक प्लेटफॉर्म, so they purchased a company called Oculus is a virtual reality company, और उसके अराउंड they are building this entire virtual world, right, which is very highly experiential. और उसका नाम है Horizon, right. So Horizon के अंदर आप दोस्त बना सकते हो, लोगों से बातें कर सकते हो, अपना ऑफिस का काम कर सकते हो, सब कुछ उस दुनिया के अंदर कर सकते हो बिना हिले अपने चेयर से, राइट. सो ऐसी बहुत सारी जो बड़ी कंपनी है, जाइंट्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन दिस. बट आई थिंक उनके साइड से जो इनोवेशन और डिसरप्शन है वो उस लेवल का नहीं आ रहा है. और उसका रीजन भी वही है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो लिमिटेड रिस्क ले सकती हैं. उनको एक सर्टेन क्वालिटी तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के बाद भी उसको मार्केट में रिलीज कर पाते हैं, तो इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन की भी उनके पास लिमिट हो जाती है, राइट. क्योंकि अगर फेसबुक आज एक्सपेरिमेंट करने लगा तो लोग सोचेंगे कि अगर वो प्रोडक्ट चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं चला तो the brand will lose its identity, right. So that's why smaller companies are doing much more disruption, right. जैसे Polygon जो इंडिया की कंपनी है, आज $10 बिलियन की कंपनी बन गई within 2 years, right. Decentraland जिसने पूरा वर्चुअल वर्ल्ड बना रखा है, वहां पर एक एक प्लॉट वर्चुअल वर्ल्ड करोड़ों का है, right. So like that, a lot of these smaller companies are doing much more innovation. Binance, आप देखो, Binance is a bit centralized, in terms of exchanges which they have, but yeah, they are also building a lot of interesting products and it's highly valued right now, right. So yeah, that's there. What is driving the growth for these companies? Right. Is it need? Is it right? So अभी हर टेक्नोलॉजी के फेजेस होते हैं, राइट. तो करेंटली जितना भी हमने पिछले 2 साल में देखा, वो एक्चुअल में रियल नीड नहीं थी Web3 की. मतलब बेसिकली प्रोडक्ट इतने मैच्योर हुए ही नहीं है कि आज हम उन प्रोडक्ट्स को उस लेवल पे यूज कर पाए. तो जो ड्राइव कर रहा था वो था लालच, राइट, टू अर्न क्विक बक्स, राइट, टू 10x देयर मनी, राइट. और वही हुआ एंड में कि जितना भी 10x था वो वापस से x पे पहुंच गया, राइट. जितना भी लोगों ने पैसा बनाया था पिछले 2 साल में, उससे कम हो गया बल्कि, राइट. तो जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे आज के दिन आप अपना टाइम किस पर स्पेंड करते हो? आप डिसेंट्रलैंड के वर्चुअल वर्ल्ड में आप दिन में बैठते हो या इंस्टाग्राम की रील्स चला रहे होते हो? आप इंस्टाग्राम की रील्स चला रहे होते हो, राइट. सो आज भी लोग Web2 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. जिस दिन लोग Web3 के प्रोडक्ट्स बिना किसी पुश के, बिना किसी लालच के, जस्ट आउट ऑफ द नीड वो यूज करना स्टार्ट कर देंगे, तब मैं मानूंगा कि हाँ, मेटावर्स आज के प्रोडक्ट उतने मैच्योर हो गए हैं कि वो सक्सेसफुल हो गया है, राइट. ये सारे प्रोडक्ट बहुत अर्ली स्टेज में है. Obviously, yeah, true. Yeah. So that is what 90s में हुआ था, जब इंटरनेट बबल बस्ट हुआ था. तब भी आप देखो कि इतनी सारी कंपनीज आ गई थी. 99% कंपनीज आज जो हैं उस टाइम पे IPO कर चुकी थी, वो बंद हो गई हैं, राइट. लेकिन वो 1% कंपनीज थी जो आज बहुत बड़ी जाइंट बन चुकी हैं. जैसे Amazon हो गया. Amazon क्रिप्टो जब इंटरनेट बबल बस्ट हुआ था तो उसके शेयर 90% से भी ज्यादा कम हो गए थे, राइट. एंड बट इसके आज आप देखो, इट्स वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनी, राइट. तो सिमिलर थिंग वुड हैपन. 90% से ज्यादा कंपनी जो आज एग्जिस्ट करती है Web3 में, वो खत्म हो जाएंगी फॉर श्योर, ये मतलब पक्का है. बट जो 10% कंपनी है या जो 2% कंपनीज हैं जो बच गई, वो आज फ्यूचर की सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनीज बनेंगी. Sure. Thank you. Yeah. So next, coming to the engagement layer. So engagement layer is something basically people would be building a lot of virtual worlds around this around Metaverse and Web3. And ये हर तरह के होंगे. जैसा मैंने कहा कि एक तरफ फेसबुक का मेटा जो है वो होराइजन बना रहा है, विच इज वेरी मच सेंट्रलाइज्ड. बट दूसरी तरफ रोब्लॉक्स जैसी कंपनी है जो कि सेंट्रलाइज्ड है, जो कि काफी बड़ा गेमिंग इकोसिस्टम बना रखी है. एंड देन सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड जैसी कंपनी है जो कि काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट. सो डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज आर देयर. गेमिंग के अराउंड भी बहुत सारे वर्चुअल वर्ल्ड्स बन चुके हैं. जैसे फोर्टनाइट है,
वो भी एक तरह का मेटावर्स ही है, जहां पर लोग अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी जी रहे होते हैं, वहां पे ग्रो कर रहे होते हैं, राइट? सो दैट इज देयर। एंड नाउ कम्स द इंफ्रा इन द हार्डवेयर लेयर। सो अभी इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ लॉट ऑफ कंटेंट, हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, देयर इज अ हायर चांस कि वो शायद बड़ी कंपनियों से आएगा। जैसे हो सकता है कि फेसबुक का और मेटा का होराइजन प्लेटफॉर्म इतना सक्सेसफुल शायद ना रहे, बट उनका वर्चुअल रियलिटी ज्यादा सक्सेसफुल रह सकता है, बिकॉज दे कैन इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर इन रिसर्च एंड बिल्डिंग दोस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? सो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि हार्डवेयर के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, दे आर बिग कंपनीज, राइट, हु आर बिल्डिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर। ये लोग 10 साल तक भी लॉस मेकिंग कंपनीज रन करके उस लेवल के हार्डवेयर बना सकती हैं जो आपको एक ट्रू वर्चुअल एक्सपीरियंस दे, जो कि आपको एक ऐसी दुनिया दिखाएं कि आप आप पहचान ही ना पाओ कि रियल वर्ल्ड में हो या वर्चुअल वर्ल्ड में हो, राइट? उस तरह की टेक्नोलॉजीज पे ये बड़ी कंपनीज काम कर रही है, राइट? देन कंटेंट के अराउंड भी बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर कोई भी बड़ा बन सकता है, राइट? इवन स्मॉलर कंपनीज, जैसे आपने देखा होगा बोर्ड एप यॉट, जो कि एक एनएफटी मतलब एनएफटीज का वो है, मतलब इट इज अ मंकी का एनएफटी। आज एक एक एनएफटी की वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर में है। और और उस तरह से बहुत सारी ऐसे एनएफटीज हैं जो कि पॉपुलर हो गई हैं बहुत ज्यादा, राइट? और वो बहुत सारी एनएफटीज में से आम लोगों ने भी बनाई है, राइट? सो कंटेंट के अंदर किसी का एक अपर हैंड नहीं है। एनीवन हु इज इनोवेटिव, right, can create different experiences and content layer over the metaverse, right? And the third is the infrastructure layer, which is basically the technology will the softwares and the technology will support this virtual worlds in the metaverse, right? तो जैसे पॉलीगॉन का जो मैंने एग्जांपल दिया था, पॉलीगॉन इज लाइक बिकमिंग द AWS ऑफ Web3, राइट? कि किसी को भी प्रोडक्ट बिल्ड करना है, राइट? जैसे आज आपको कोई ऐप लॉन्च करना होता है, बहुत सारी चीजें पहले से ही होती हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो पे आप कोड कर पाते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी प्रेजेंट हैं। देन एंड्रॉइड आपके लिए प्रेजेंट होता है, प्ले स्टोर है, बहुत सारी चीजें पहले से ही है जहां पर आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट बनाना है और उसको लॉन्च करना है। सिमिलरली वेब3 के अंदर भी ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हैं जो बन रहे हैं, जिनके थ्रू आप इजीली वो एक्सपीरियंसेस बिल्ड कर पाओ, राइट? आपको ऐसा नहीं है कि शुरू से गाड़ी बनानी है तो पहिया बनाना पड़ रहा है। वो सारी चीजें आपको पहले से मिलेंगी, आपको बस जोड़ के अपनी इंटरेस्टिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बिल्ड करने हैं उसके ऊपर। सो दैट इज व्हाट द इंफ्रा इन द हार्डवेयर लेयर इज, राइट? Saurabh, Siddiqui would like to know a bit more about Polka City Metaverse. Right. You could. So Polka City Metaverse is, it's also a decentralized, Metaverse which is built on Polkadot, right? तो Polkadot भी जैसे काफी सारे क्रिप्टो आपने सुने होंगे, कार्डानो है, सोलाना है, उसी तरह से Polkadot भी एक तरह का क्रिप्टो है, जो कि लेयर 0 है बेसिकली। तो it's built by some of the well known entrepreneurs and Polkadot के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं। तो Polka City is one of the virtual world that is built over Polkadot, राइट? जहाँ पर लोग वर्चुअल लैंड्स खरीद सकते हैं, वर्चुअल गाड़ियां खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, उसके अंदर गेम्स खेल सकते हैं, राइट? सो दैट प्रोडक्ट इज ऑल्सो इन अर्ली स्टेज, और इवेंचुअली अगर वो इवॉल्व हो पाया तो क्या पता कि वो एक फ्यूचर वर्ल्ड हो जिसके अंदर लोग शायद रहें, टाइम स्पेंड करें, दोस्ती करें, लोगों से मिलें एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? तो जैसे डिसेंट्रल लैंड है, सिमिलर टू दैट पोल्का सिटी भी वैसे ही कुछ प्रोडक्ट है। Thank you so much. I hope Siddiqui, आपकी queries clear हो गई. If you have anything more to ask, you can always type on the chat. So yeah, and a lot of other innovation that is yet to happen in the hardware is that how we can replicate our senses in the virtual world, right? जैसे आप बोलते हो कि यार नहीं, रियल वर्ल्ड का जो मजा है यार वो वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं है, बिकॉज आप पहाड़ों पे जाते हो, आपको जो हवा जो वहाँ की होती है उसका फील मिलता है, आपको सनलाइट का जो फील मिलता है, वो सारी चीजें होती है, वो आपको यार वर्चुअल वर्ल्ड में कैसे मिलेगी? तो उसके अराउंड भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है कि आपकी स्मेल को डिजिटाइज किया जा सके, कि आप पहचान ही ना पाओ कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में स्मेल कर रहे हो, रोज को स्मेल कर रहे हो या रियल वर्ल्ड में कर रहे हो, राइट? विंड, वाटर, हीट। सो आपके जो सेंसेस हैं वो भी उसके अराउंड भी टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है कि कैसे वो सेंसेस को हम वर्चुअल वर्ल्ड में लेके आ सकें, कि जो सारे एक्सपीरियंसेस हमें रियल वर्ल्ड मिलते हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में मिल पाए, राइट? सो काफी सारे सूट्स भी बिल्ड हो रहे हैं, हैप्टिक फीडबैक सूट्स,
कि जैसे आप किसी से मिलते हो तो हैंडशेक करते हो, तो हैंडशेक करने पे जो आपको फील होता है, किसी का टच का फील होता है, वो फील भी आपको वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हो पाए। आपको कोई थप्पड़ मार दे, आपको कोई मुक्का मार दे, आपको जो पंच लगता है, पंच का जो फील है वो आपको मिल पाए। तो वो सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, राइट, वो सब भी टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी थ्रू रेप्लिकेट किया जा सकते हैं। एंड वो किया जा सकता है हैप्टिक फीडबैक के थ्रू, कि कोई भी टच या अलग तरह का एक्सपीरियंस है वो आपको एक सूट है उसके थ्रू आप फील कर पाओ। तो जैसे एक इंसान इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे होगे, एक्चुअल का बॉक्स पकड़ा हुआ है, बस दूसरा इंसान उसको फील कर रहा है थ्रू हैप्टिक फीडबैक। क्योंकि जो प्रोडक्ट चीज को पकड़ने का जो टच का सेंसेशन है, वो रेप्लिकेट किया जा रहा है थ्रू दैट ग्लव्स जो दूसरे वाले इंसान के हाथ में है, राइट। सो दैट्स हाउ द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग। इवन आपके कीबोर्ड्स एंड लैपटॉप्स, ये सब भी रेप्लिकेट हो रहे हैं। सो अभी आई थिंक रिसेंटली किसी तो कीबोर्ड कंपनी ने ऑक्यूलस के साथ पार्टनरशिप करके ऐसा कीबोर्ड बिल्ड किया है कि आप मेटावर्स के अंदर, वर्चुअल स्पेस के अंदर आप उसको ऑपरेट कर पाओ, राइट। सो या, सो दैट्स दैट। सो एक so if you have time, I can quickly show you So, what we are also building absolutely. at Tamasha, and how we are building the gaming metaverse. So again, let me share it again so that I think I'm not sure people. So the product that I have shown might not, look like, what I've told you, in the last 30 minutes. It's because, as I said, that it will take time, right, for people to actually start using virtual products, and meanwhile we have to own the community, right? जैसे आज Facebook इतना well positioned है, metaverse के around product build करने के लिए, क्यों? Because उसके पास audience है, उसका user base है। तो आप user base तभी बिल्ड कर सकते हो जब आप आज जो लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर चीजें बिल्ड कर पाओ, राइट। सो दैट्स व्हाई द एंटायर इकोसिस्टम वी आर बिल्डिंग ऑन द स्मार्टफोन्स, राइट। और शायद 5 साल बाद या 10 साल बाद जो हमारा तमाशा का इवॉल्व फॉर्म होगा वो वर्चुअल स्पेस में होगा, राइट। बट करेंटली हमारा जो कोर फोकस है वो कम्युनिटी के अराउंड है।
कि कैसे हम डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटाइज गेमिंग कम्युनिटीज बना पाए और उन कम्युनिटीज को हम स्केल कर पाए, राइट? कि जितने भी लोग गेम्स खेलना चाहते हैं, गेम्स के अराउंड दोस्त बनाना चाहते हैं या गेम्स की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, वो तमाशा पर बनाएं। एक बार वो कम्युनिटी स्केल कर गई, फिर उनको फोन से वर्चुअल रियलिटी में शिफ्ट करना इज नॉट अ टास्क, इज नॉट अ चैलेंज, राइट? Absolutely. So that's what our plan is, and that's how we are going to scale. So that's it from my side. Would love to answer. Best of luck for that. Thank you. Thank you. So there is a question, Saurabh, that has come in. What are the immediate consequences that you see of metaverse in the industry? Right. So as I said कि अभी जो metaverse है वो जो build होगा वो I think communities के around center होगा, not around experiences. मतलब मैं आपको सच बताऊं, मैंने खुद virtual reality headset खरीदा था recently and I just used it once. मतलब मैंने एक बार यूज किया और उसके बाद यूज नहीं कर पाया because it's problematic to wear that and Exactly. heavy Yeah. and like that. तो अभी जो डिसरप्शन होगा कम्युनिटीज के अराउंड होगा, जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स उसके अराउंड होगा, और उसमें जो सम ऑफ द इंडस्ट्री जिसकी इमीडिएट यूटिलिटी है वो गेमिंग है। तो गेमिंग के अराउंड जो डिसेंट्रलाइज कम्युनिटीज बन रही हैं वो अभी स्केल हो पाएंगी। उसके बाद डीफाई है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, वो नेक्स्ट स्टेप पे स्केल होगा। एंड उसके बाद जो वेब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कि शायद आज हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, कल हम कोई डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क यूज करेंगे। आज हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, गूगल पे यूज कर रहे हैं, उसकी जगह शायद प्रोडक्ट में हम डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गूगल पे यूज करेंगे, जहां पर हम शायद बिटकॉइन या किसी दूसरे क्रिप्टो से एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो उस तरह के प्रोडक्ट्स सेकेंड फेज में स्केल होंगे, और उसके बाद जाके आई थिंक इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स जो वर्चुअल रियलिटी और जो ट्रू वर्चुअल एक्सपीरियंस है उसके अराउंड के प्रोडक्ट्स बिल्ड होंगे, राइट? सो दैट्स हाउ आई सी द रोड मैप। Thank you. So we also have some concerned parents in the group. So they would want to know, brands are wooing kids a lot, and how in the metaverse, obviously, universe. But how safe is the fidgeter world for the young ones? I think if people are given access to the right content, this kind of digital world or those digital products are definitely useful, right? If I even consider that gaming is something which helps you to improve your reflexes, your intelligence. It is actually creates a lot of positive impact in your brain. But if it is done as an addiction, right, then it is harmful, right? So if we as in a real world, if everything has got limits, then it is useful for you, but excess of everything is harmful, right? So you have to apply the same rules that are there in the real world. In the real world, you do everything, but if it is done in limit, it doesn't harm you, right? People drink, but if they drink a lot, their liver gets up, there's a problem, Yeah. right? So similarly, it's with so it applies for kids, for adults, for anyone, right? So if the things are given to them in limitations, they'll definitely. Yeah, too much of anything is always harmful for your health and your mind and all that. So yes, I think the right answer would be parents will have to limit them. Correct. Screen time, सब कुछ हो जाता है. So I think we need to be more careful and try and control our kids in this space. Yes. So I think there is a Mr. Ajay would like to know, can we play Matka on your platform? I think this is for you. Yeah. So your platform can be. Yeah. Not now. So currently we are, having very limited games for now, but in the coming few months, we'll have a lot of games, poker, rummy, Dehla Pakad, and a lot of game formats that would be there on the platform. And soon, I think, your favorite game would also be there. The team is working day and night for that. Sure. Vinayak would love to know any side effects of VR box using for metaverse. Side effects of VR box. VR box. VR. So I think currently the kind of products that are there in VR that are not, as I said, not that comfortable, not that good for eyes. So using it for in access will definitely harm you. But I think over the time, as technology betters, I think we'll have VR product that you can wear all day, right? Yeah, I think now the ones which are coming, even I have one at home and it's not too comfortable, frankly. So yes, I would definitely agree to what Saurabh is saying. Currently जो है वो उतने comfort level नहीं है, but I'm sure things get advanced further and
things will be better. Avijit, yes, we will have this recording on our YouTube crypto TV channel. I think hopefully by the next week or so it will be uploaded. So you can always see the recording. Apart from this, I don't think there's any other questions. Okay, there's one more which has come in. Lucky 7 and Rollete is available in your gaming app. Not now. It will be there soon. It will be live soon. It's really great to see the excitement, among the audience around the game. There are a lot of gamers here, I believe. Yeah. It will soon be there. Okay, Ajay would also like to know what are the investment opportunities with you. Sure. So maybe I can ask Saurabh to offline connect with Ajay and take this further. I will share, Avijit, I will share the YouTube link with you once I get it. And I think there is no more questions. I can't see any more coming in. So I think that's it for the day. Guys, any more questions, please type it on the chat section. We will take it up immediately. Avijit is raising his hand. Can I get you to talk? Yes, Avijit. I have a little question about NFT and its marketplace. As I am a creative person, I am not that much in the game. Mm-hmm. So how a project is designed from the planning to execution to the marketing and the can you define that stages, means how it is possible? Means I have plans, lot of plans. Got it. So and I have materials also. Okay, interesting. I want to make a comic, not comics actually, it's a painting book. So I want to make I don't think that sort of NFT I have seen anywhere. So if we can in PDF or any other formats, we can make a book of painting, like comic strip, a narrative. Means how I can create that. This is one example of the project I'm thinking from. The plan I can do means as a product I can see the how to make it, but how to sell it and the marketplace and the whole marketing system. Got it. So basically NFTs जो हैं वो दो तीन तरह की होती हैं actually. एक तो होती है, there are three types of NFTs that are working really well in the market. पहली NFT है which is an art, right? जो कि आपने भी बताया कि जहाँ पर लोग उसमें जैसे रियल वर्ल्ड में लोग आर्ट को वैल्यू देते हैं, और रियल वर्ल्ड में आर्ट की वैल्यू कब आती है? जब वो आर्ट होती है ना, वो जितनी ज्यादा एक्सटिंक्ट हो और उसकी जो जिसने बनाई है उसमें लोग बिलीव करते हो, उसके आइडिया में बिलीव करते हो. जैसे काफी सारे लोग आप देखते हो, जैसे काफी सारे पेंटर्स तो उनके मरने के बाद फेमस होते हैं ज्यादा, राइट. वो पेंटिंग उसके बाद कोई बन नहीं पाएंगी, वो उतनी ही है, राइट. तो एनएफटी के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो लोग एनएफटी के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, उसमें एक लिमिट डाल देते हैं. जैसे आज बोर्ड एप याcht है जो कि मंकी की फोटो होती है, वो सिर्फ 10,000 है, राइट. 10,000 से ज्यादा वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, राइट. तो कोड किया गया है, राइट. तो वहां से एक वैल्यू आती है स्क्रैसिटी से, राइट, कि अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो वहां पे स्क्रैसिटी से वैल्यू ला सकते हो कि ये चीज इतनी एग्जिस्ट करती है. सेकेंडली, आप में या आपकी आइडिया में, आपकी फिलॉसफी में, आपके थॉट में बिलीवर्स होने चाहिए. और वो बिलीवर्स जो होते हैं ना, इनिशियल बिलीवर, जैसे कोई भी रिलीजन कैसे चालू होता है. As an expert, I want your opinion on this sort of project. Got it. तो मैं आपको वही बताऊंगा कि आपको वही अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी. जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं और फिर आपको आपके प्रोजेक्ट का बताऊंगा. जैसे जब एक रिलीजन या पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो लोग उससे जुड़ते हैं अपने आप, राइट. और जब वो मूवमेंट बड़ा हो जाता है तो फिर सब उसमें बिलीव करने लगते हैं, सब उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, राइट. सब उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, राइट. तो बेसिकली सिमिलर चीज एनएफटीज में भी होती है कि आपको अपने कुछ इनिशियल बिलीवर्स ढूंढने पड़ेंगे, अपने प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे लोग जोड़ने पड़ेंगे जो कि आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा बन पाए और उसको कम्युनिकेट करें, मतलब जिनको लोग सुनते हो, राइट. तो जैसे जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उनके पास अन्ना हजारे थे केजरीवाल के पास, जिसके कम्युनिकेशन पूरा लोगों तक चला गया था, राइट. सो वी नीड इन्फ्लुएंसर्स. करेक्ट. सो सेम थिंग जैसे बोर्ड एप याcht के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि जो सबसे मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है, उसने जब वो एनएफटी परचेज किया था
तो सब लोगों में क्रेज हो गया था, सारे बड़े बड़े लोगों ने तो परचेस करना चालू कर दिया। जब सारे बड़े लोगों ने परचेस करना चालू कर दिया, तो सारे जो मीडियम लेवल लोग थे, जिनके पास पैसा था, उनको लगने लगा कि यार मैं भी इसके लिए ज्यादा पे करूंगा। उसकी सडनली ब्रांड वैल्यू अलग ही लेवल पहुंच गई, राइट? सो दैट्स हाउ यू हैव टू बिल्ड इट। यू हैव टू ब्रिंग इन सम इन्फ्लुएंसर जिनको लोग सुनते हो, जो सोशल मीडिया पे हो, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, जिनको लोग फॉलो करते हो, जो जैसा वो कर रहे हो वैसा बाकी लोग भी करने लगे। Basically, it's a marketing strategy to That's use influencers. Correct. Sir, can you provide your phone number? Personally, with some projects, I want to some advice from you. Okay, I'll share it here in the chat. Let me see here. So I've just texted in the chat. अच्छा, sorry, I think it's not public. और एवरीबडी आप कर देंगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, या फिर यू कैन जस्ट कनेक्ट विद सेलेक्ट। Cool. So I think that's it. Any more questions, guys? No. I would be more than happy to reply. Yes. Yes. Thank you. Thank you so much. That was nice And interacting thank you with to sir Abhijit. also. Thank you, Abhijit. Thank you. So I think that's it. Saurabh, we had a great session. Thank you so much. Today's session was very interactive, and I'm really happy that we could, kind of cover this topic in a very layman language to all the audiences. And I'm sure most of them really enjoyed the session. Thank you, Saurabh, for taking out time and coming for the session. Really appreciate your time. I would also like all the crypto enthusiasts to please download the CryptoWire app. You can also follow the Real Crypto TV YouTube channel for all our recordings of the webinar. So the past webinars are already available in the YouTube channel, so you can always download and view it. Thank you so much. Thanks, Saurabh. It was great interacting with you. Have a nice day. Have a nice day, guys. Thank you so much. Yeah. Bye.